सर, एक अग्नि परीक्षा आपके सामने चुनौती है। 29 सीट अग्नि परीक्षा ने पुष्प वर्षा है, 29 की 29 बार कर रहे हैं। कोई दुनिया की ताकत भाजपा को जीतने से रोक नहीं सकती। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मोदी की सरकार वापस आ गई तो विपक्षी नेता जेल। ये उनका डर खा रहा, अंदर से जो घबरा रहे हैं उसकी भाषा निकल रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई को अगर मैंने छोड़ दिया वो मेरे कंट्रोल में है। वो बेहोशी में भूल गया कि मोदी जी की सरकार देश में काम कर रही है। लेकिन जनहित के मुद्दे गायब रहे, मांस, मछली, हिंदुत्व और मंगलसूत्र, ऐसे किसने कह दिया? ये कांग्रेस ने खड़े करे। हमने तो कहा कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 5वीं माननीय मोदी जी ने बना के बता दी। तो ये इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे? G20 करा के दिखा दिया। की बार 400 पार का नारा 100% पार करेंगे। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 29 की 29। सेल्फी के साथ साथ ये कहा जाए कि सीधे सीधे वोट डाल के लोग पहुंच रहे हैं। किस तरह का उत्साह देख रहे हैं इस बार इंदौर में? देखिए, उत्साह बहुत है, उमंग बहुत है, और अभी तो सुबह के 9 बजे हैं, उसमें इतना मतदान हुआ तो कल्पना कीजिए शाम तक कितना मतदान होगा। ये तभी संभव है कि सब चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, इंदौर आगे बढ़े। शंकर भाई ये कह रहे थे कि फीका रहेगा इस बार का माहौल, लेकिन सुबह से किस तरह का माहौल देखा आपने? सब जगह उत्साह है, लंबी लंबी लाइनें हैं, और ये उत्साह तभी है कि लोग चाहते हैं कि इंदौर एक ऐसा शहर है, जागरूक शहर है, जो ये समझता है कि हमें किसको वोट देना है। इंदौर को ये कहा जा रहा था कि इनिशिएटिव लगातार किए जा रहे हैं मतदान को बढ़ाने के लिए। 56 दुकान पे फ्री पोहा, जलेबी, आइसक्रीम मिल रहा है, फिल्म टिकट्स दिए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तैयारियां अच्छी रही। ये इनिशिएटिव देश के दूसरे भागों में भी होना चाहिए ताकि मतदान बढ़े। बिल्कुल, हमारा इंदौर हर क्षेत्र में आगे रहता है और मतदान में भी इनिशिएटिव लेने में आगे है। सिर्फ 56 पे नहीं, बहुत सारी कॉलोनियों में व्यापारी संगठनों ने, इंडस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो पहले मतदान करके आएगा उसको विशेष कुछ न कुछ पैकेज दिया जाएगा, चाहे सलपार के रूप में हो, कोल्ड ड्रिंक के रूप में हो, छाछ हो, फिल्म टिकट हो, सैंडविच हो, आइसक्रीम हो, बहुत सारे। सर, फैन फॉलोइंग तगड़ी दिख रही है, लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं अभी से। नहीं, ये इनका प्यार है। अच्छा, मैं हमेशा शंकर भाई जो हमेशा करता हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े उनसे मतदान को लेकर सवाल आप ही कर लीजिए प्लीज। कैसा लगा आपको वोट देके? बहुत बढ़िया। वोट फॉर। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। हमारे हिसाब से तो इंदौर में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। बेटे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अब की बार 400 पार। 400 पार। भीड़ बहुत थी लेकिन मजा आया। भैया 8 लाख पार। 400 पार। हमारे साथ इस समय उमर साहब के बेटे हैं, पहली बार वोट डाला है, कैसा लगा? हाँ, ये पहली बार वोट डाला है, बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है सियासी जो दल के आप नेता भी बनने वाले हैं आने वाले समय में, तो क्या सियासत? ये किसने कहा हम नेता बनने वाले हैं? ये किसी ने कहा नहीं। राजनीति में इंटरेस्ट अभी तो मतलब बस उमर साहब और डॉक्टर साहब को जितना भी हम मदद कर सकते हैं उसमें इंटरेस्ट है। हमने कभी नहीं कहा कि हम नेता बनने वाले हैं आगे के कल में। तो वोट डाला है तो कैसा लग रहा है? इसमें पहली बार जमहूरियत की जो ताकत है उसका आप साथ दें। नहीं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे नौजवान और फर्स्ट टाइम वोटर इस हक का इस्तेमाल करेंगे, वो वोट डालेंगे, क्योंकि अगर इस बार आप वोट नहीं डालोगे तो पता नहीं अगर कब मौका मिले फिर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Progress, that's all. Oh, it's all about this. Empowering women, progress, growth, बहुत सारे जो ये दे सकते पॉलिसीज। तो हमारे देश का चहुमुखी विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था में हमारा नंबर अव्वल रहा है। महिलाओं के उसमें उनको रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी हर तरफ से, जिस तरह से जेंट्स को मिलता है वैसे लेडीज को भी मिलना चाहिए, और आगे होगा। उज्जैन का विकास हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो जाए। हमारे सीएम भी हमारे ही है। आपसे समझना चाहूँगा, बहुत भारी संख्या में मतदाता जो हैं वोट पोलिंग बूथ पे पहुँचे, क्या मुद्दे थे उनके जहन में, उनके दिमाग में, जिनके आधार पर उन्होंने वोट किया? मुद्दे मोदी जी का काम ही है, उनके अलावा और कोई दिखता ही नहीं है कि कौन कुछ कर देगा। एक तरफा लड़ाई लगती है आप? तरफा लड़ाई है, कोई है ही नहीं है। आपको क्या लगता था, क्या मुद्दे होंगे? लड़ाई एक तरफा लड़ाई। आपसे समझना चाहूँगा, आप किन मुद्दों के आधार पर आज वोट करने पहुँचे थे? मैं जो विचारधारा है वो अच्छी विचारधारा चल रही है, आज विचारधारा के ऊपर मैं वोट दे रहा हूँ। कुछ समानता लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, इसकी वजह से वोट दिया जा रहा है। आपकी अर्धांगिनी भी आई हुई हैं, आपके लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे थे? पुणे की महिलाओं के लिए क्या सोचकर आप लोग मतदान केंद्र पहुंचे थे और किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट किया, ये मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा कर रहे हैं और क्या, इसलिए
जो भी आपका कैंडिडेट हो अच्छा करे। तो ये तमाम मुद्दे, मैं कुछ और मतदाताओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। अर्ली कमर्स हैं आप लोग, सवेरे सवेरे ही चले आए, किन मुद्दों के आधार पर अब की बार पुणे की जनता जो है वोट करने पहुंची, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो है पूना का विकास, पूरे देश का विकास, प्लस आगे जाके जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हो रहा है, ये दो जो मेरे हिसाब से ये दो हमने देखे। हैदराबाद में इस बार मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है जब से माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में आई है। पहले मैं आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाता हूँ। सर, आपने वोट दे दिया? दिखाइए सबसे पहले वो तस्वीर। बिल्कुल, ये देखिए वोटर आई कार्ड हाथ में और साथ में ये तस्वीर जो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि वोट देने से पहले, बटन दबाने से पहले क्या जहन में था आपके, क्या सोच रहे थे? इलेक्शन है, वोट देना है, जरूरी है। मुल्क की तरक्की के बारे में, मुल्क की तरक्की के बारे में, भाईचारगी के बारे में क्या सोच रहे हैं सर वोट देने से पहले? क्या जहन में है? कुछ नहीं सोचना, बस अच्छा। देश के बारे में कुछ नहीं, सब ठीक है, बस चल। ठीक है मैम, महिलाओं का वोट बहुत अहम होता है, तो क्या सोच रहे हैं, सोचा आपने वोट देने से पहले? कुछ भी नहीं सोचा था। अच्छा, ठीक है। देखिए, आपने वोट दे दिया सर? क्या सोचा सर वोट देने से पहले आपने? हम कुछ भी नहीं सोचे। तो कुछ तो सोचा होगा मुल्क के बारे में? नहीं जी, क्या सोच। लेकिन सबसे अच्छी बात ये दिख रही है कि देखिए आप बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, फिर भी आप वोट देने के लिए आए। देश के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, देश के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है कि आप बीमार होते हुए भी आपने देश के बारे में सोचा। Okay, you heard perspectives from the ground, that one being from Hyderabad. Yes, voter turnout has been a large part of conversation. Let's get some figures of how it's shaping up this morning in the fourth phase. Pia, my colleague, is standing by. Then we go back to our reporters. Pia, over to you. Indeed, let's take a look at the 9 a.m. numbers that have come out till now. Srinagar voter turnout at 5.07% already. Last time around it was at 14%. Kadapa in Andhra Pradesh voter turnout 12.09% till 9 a.m. In Mangalagiri in Andhra Pradesh it is 10.80% in the morning. Of course, the electorate is casting its mandate. In Visakhapatnam as well, 10.82% of the people have come to cast their votes. In Vijayawada, about 8.95% of the people have come to cast their votes. Shifting focus to Begusarai in Bihar, where about 8.85% people have cast their votes till 9 a.m. today morning. In Khunti in Jharkhand, 12.20% of the people have cast their mandate. These are of course numbers that are trickling in. Udaipur in Bihar, where Nityanand Rai is contesting, 9.31% of the people have cast their votes. In Aurangabad in Maharashtra, about 7.52% of the people have cast their mandate as well. In Pune, 6.61% of the electorate has turned out this morning till 9 o'clock. About 10.59% of the people in Koraput are early birds who have cast their vote as well. Shifting focus to Telangana in Hyderabad, about 5.06% of the people have come out till 9 o'clock this morning. In Nizamabad, the early trends are 10.91% this morning. In Karimnagar, where it's 10.23% till 9 o'clock this morning. Another important seat in Telangana, Malkajgiri, where about 6.20% of the people have come out to cast their mandate. In Secunderabad, about 5.40% of the people have come out to cast their votes. Numbers are marginally better, much better in fact in Kannauj. The voter turnout stands at 14.23% this morning till 9 a.m. In Asansol in West Bengal, it stands at 13.03%. In Burdwan, again in West Bengal, about 15.88% is the voter turnout till 9 a.m. This morning. Back to you, Rishabh. Pia, thank you for the very quick, very energetic updation. We'll keep a track. Figures are looking good this morning. That's the sum total. They're looking good. They're looking up in places like Srinagar as well, which is going to see 4-5 times the amount of voting. Let's head to the ground once again. Our reporters are joining us on the broadcast. Rainik Datta back with us from Durgapur in West Bengal. Ashik Mir is with us in Pulwama. Mohammad Afzar back with us in Hyderabad. Abhishek back with us in Lakhimpur. Let's hop across first to Ashik. Ashik, if you can hear us, I see a lot of people around you. They're coming to cast their votes. It seems calm. It seems the sun is shining. It's a happy circumstance. What are people saying? क्या चर्चा चल रही है? क्या मुद्दे हैं लोगों के लिए? क्या सोच है? हाँ बिल्कुल, पुलवामा में हम इस वक्त मौजूद है और ये जो इलाका है, इससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉयकॉट का काफी असर लग रहा था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं
जो सुबह 7 बजे घर से निकले वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आज किन मुद्दों के ऊपर आप वोट डालने निकले हैं? साउथ कश्मीर का ये इलाका, आज से पहले कैसे हालात थे? यहाँ पर 0 पोलिंग होती थी, लेकिन आज लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल पे हमारे इस मुल्क का जो विशाल मुल्क है, ये हमारी खूबसूरती है। इस मुल्क की, हमारा लोकतंत्र देश में आज इस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल को लोगों ने अपनाया है। जहां हमने पुलवामा की बात करी है, यहाँ लोग बाइकआउट किए देखेंगे पिछले दिहाइयों से, लेकिन इस लोकसभा इलेक्शन में लोग बेसब्री से इंतजार में थे कि कब हमारे जिले में पोलिंग का दिन होगा और हम निकलेंगे, हम अपने इस विशाल जमहूरी मुल्क को और ज्यादा मजबूत। बिल्कुल, आपके इलाके की अगर हम बात करें तो काफी डिस्टर्ब रहा था, अगर हम माजी की बात करें, लेकिन आज किन मुद्दों के ऊपर आप वोट डालने निकले हैं? क्योंकि लंबी लंबी कतारें हमने साउथ कश्मीर में पहली बार सुना होगा, लेकिन आज जो है ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी भीड़ लोगों की जमा हो चुकी है जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई युवा नौजवान भी हैं, महिलाएं भी है, और साथ साथ यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मुद्दों की जब बात आती है तो क्या क्या मुद्दे यहाँ पर खास तौर पर देखे जा रहे हैं। कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, लोग इस चीज से अवेयर हैं कि हालात कैसे थे हमारे कश्मीर में। नौजवान आज का जो पिछले दिहाइयों से उसने 2019 के बाद भारत सरकार को इस चीज की मुबारकबाद भी मिलनी चाहिए कि उन्होंने खुशहाली, खूबसूरती और नौजवान का जो डर था वो अब निकल चुका है। ओके। जिले में, पुलवामा जिले में काफी कठिनाई पैदा हुई, लेकिन इस बार कैसे लोगों ने हिस्सा लिया, इस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल को किस तरीके से अपने मनवाया, और इस विशाल मुल्क की जितनी तारीफें की जाए उतना ही कम है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज का नौजवान अधिकार चाहता है कैसे अपने विशाल मुल्क को लेके इस चुनाव में हिस्सा लूं, ताकि मैं उस नुमाइंदा को चुन लूं जो मुल्क के बड़े ऐवान में, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, बिल्कुल वहां पर अपनी बात रखे। बिल्कुल ऋषभ, आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। ये पहली बार है, साउथ कश्मीर का इलाका इससे पहले कई एक लिहाज से जाना जाता था, लेकिन आज बदलाव ग्राउंड पर दिख रहा है। एक लोगों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर एक लोग भी है। आप मुझे बताइए, इस इलाके की जब बात आती है तो क्या क्या मुद्दे यहाँ पर खास तौर पर देखे जा रहे हैं? किन मुद्दों के ऊपर आज यहाँ पर वोट डाला जा रहा है? सर, हम अपनी जो गाँव का है, हम अपनी गाँव की खुशहाली देखना चाहते हैं। हमने इसलिए वोट डाला है कि जो हमारा लीडर हो वो हमारी बात आगे लेके जाए, क्योंकि हमारे जो ख्वाहिशात थे वो आज तक दिए जाएंगे, मगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो लीडर हो हमारे लिए आगे बात करे। बिल्कुल, आपका लीडर जो है वो बनना चाहिए जो ऐवान में आपकी बात रखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से ही शुरू हुई, और ये मुकामी नौजवान है। आज से पहले इनको किसी और नाम से जाना जाता था, स्टोन फेल्टिंग का हब हुआ करता था, लेकिन आज हालात ग्राउंड पर बदले हुए हैं। What do you, Rishabh? Okay, very energetic reporting, and let's in the middle of an election, let's put politics aside for just a minute, ladies and gentlemen. 13% was the voter turnout last time around, primarily because of a security threat, a threat to life, and a boycott call by people like Umar Farooq. Okay. Infamously the chairman of the all-party Hurriyat's conference. And now you're seeing people gather. I'm hoping that the voter turnout is already at about 6%, and it'll definitely cross 13, 20, 30, 2 or 3 times would be a very healthy voter turnout. Just people are coming to vote, okay, and all parties, including in the opposition, will say democracy is the best thing, and yes, it is. You're seeing something very, very poignant taking place. These people are not voting for the BJP, because the BJP is not a contestant in these seats. They're not fighting any of these seats. Yes, you can have an argument of why they're not fighting, should they have fought, but they're not fighting the seats. The primary players are still the National Conference and the PDP. But just that the people are being able to come out in a circumstance that we are being able to report this easily.
with multiple people, traveling around if you've been observing it, we've been partaking in the reporting process for many, many years. It's a sight for sore eyes. Very happy to see that. I know there are larger questions here about statehood and development and all those matters. We'll discuss them through the course of the day. Okay, let's hop across. We've got the report there. Let's go straight to Rainik Datta in Durgapur. Rainik, what's happening around you? क्या चर्चा चल रही है? लाइनें थोड़ी बढ़ गई लगता है और लोग आ गए हैं. एकदम देखिए, जितना समय जा रहा है उतना ही लाइन बढ़ता ही जा रहा है वर्धमान दुर्गापुर में। और मैं बात करने का कोशिश करूंगा लोगों से कि दादा कौन से मुद्दे के आधार पर आज आप लोग मतदान करने के लिए आए हैं? समझे नहीं, कौन से इशू के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? You can, yeah, why don't you speak in Bengali and translate for us? What's the harm? Please, go ahead. কোন ইস্যুর উপর আপনারা ফোকাস রাখছেন? এই স্টেটের ইস্যু, সেন্ট্রালের ইস্যু, কোন বিষয়গুলোকে আপনারা মাথায় রেখে ভোট দিতে আসছেন? दादा कौन से मुद्दे के ऊपर आप लोग मतदान करने के लिए आए हैं? सेंट्रल के ऊपर। दादा कौन सा मुद्दा आज फोकस में रहेगा? दादा आप तो नौजवान हैं, कौन से मुद्दे आपके नजर में है? कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा? माफ कीजिएगा, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, पीछे पूछ लीजिए। दादा कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? ये सेंट्रल का मुद्दा है, जो भी वोट देना है। दादा कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस करके वोट देने के लिए आए हैं? वोट तो देने आए हैं ताकि सब कुछ अच्छा हो, सब चीज, रास्ता घाट, नौकरी, सब कुछ हो, इसी वजह से आगे देखा। दादा कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? कौन सा मुद्दा? सेंट्रल, स्टेट, डेवलपमेंट, कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा? ऑब्वियसली डेवलपमेंट। दादा कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? अभी बोले का बोलना मुश्किल। दादा वोट देने के लिए आए हैं तो कौन से मुद्दा आपके दिमाग में है? कौन से मुद्दे के आधार पर मतदान करेंगे? स्टेट का डेवलपमेंट, सेंट्रल का डेवलपमेंट, कौन से इशू को सामने रखेंगे? स्टेडियम में होगा। दादा कौन सा मुद्दा आपको लगता है अभी बहुत महत्वपूर्ण है? विकास के मुद्दे पे। दादा आप लोग तो वोट करने के लिए आए हैं, कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? उन्नयन विकास के ऊपर। तो बहुत सारे महिलाओं भी इधर शामिल हुए हैं ये वोट के उत्सव में। मैडम कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। मैडम कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? कोई नहीं। मैडम আপনি তো ভোট করতে এসেছেন, কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রাখবেন? আমি কিছু বলবো कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस करेंगे मैम? आगे देखिए, हम नहीं बोल पाएंगे। मैडम कौन से मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? Okay, all right, Rainik. Rainik, we've sort of understood. I mentioned this in the last telecast. I mentioned this in the last phase. There is some good news out of Bengal that we are more than halfway through the election in Bengal now. Okay, the south of Bengal, Kolkata, and all are yet to vote, but there has been an observable reduction in the amount of violence taking place. And I don't want to jinx it, so fingers crossed that that's how it stays. So that's the good news. But it is palpably obvious, and I'm discussing this every single time, you get a pulse. Now you just got a pulse there, and that's all you got. It's anecdotal. It's not scientific, but it's a pulse there. It's a pulse is telling you that a lot of people don't really want to talk, okay? And some of them will be shy, and some of them, simply don't have something to say. That's perfectly fine, okay? But there seems to be a little bit of a very palpable trend that you see. A lot of people hesitating from saying in front of a camera anything. And that's telling its own story. Meanwhile, in Pulwama, people are happily talking. Look at that change taking place. Let's hop across to Hyderabad, where another very interesting battle is going on, where again the fate of Asaduddin Owaisi is to be decided. He's hoping that he's going to win that seat and return to Parliament. Mohammad Afzal is standing by. Mohammad, what are people on the ground saying? क्या चर्चा चल रही है? बिल्कुल, मैं लोगों से बात करूंगा। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि मैं इस वक्त हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में हूं और यहां पर एक मंदिर को
पोलिंग बूथ में कन्वर्ट किया गया है। ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि जो जहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं वहीं पर लोग लोकतंत्र के मंदिर को स्ट्रांग करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की सीधी टक्कर इस बार मधुलता से है, बीजेपी से जो कॉन्टेस्ट कर रही है। और इस बार फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार मधुलता स्ट्रांग मानी जा रही है, क्योंकि मधुलता के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के यहाँ पर कैंपेन किया है, अमित शाह ने भी यहाँ पर कैंपेन किया है। लेकिन एक जो चिंता की बात है वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे हर बार कम रहता है। लास्ट टाइम भी 45% से कम था, और आज हम सुबह 2 घंटे की बात करें 9 बजे तक तो सिर्फ 5% वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम आज बिल्कुल ठीक है। अभी 11 बजे के बाद भी इस वक्त भी मौसम यहाँ पर अच्छा है, मौसम में बिल्कुल भी बहुत तेज धूप या गर्मी नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर, आप वोट करने आए हैं? वोट दे दिया आपने? अच्छा, करने जा रहे हैं। क्या सोच करके वोट कर रहे हैं सर इस बार? एज ए सिटीजन यू शुड वोट सर। हाँ, लेकिन क्या मुद्दे हैं? कुछ तो सोचा होगा जहन में कि देश के विकास के लिए, रोजगार, जो देश के लिए अच्छा करेगा उसके लिए तो वोट जरूर करना है। जो देश के लिए अच्छा करेगा उसके लिए तो वोट करना है। इस बार हमने कॉम्युनल लाइंस बहुत सुनी, बीजेपी की तरफ से भी, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी। क्या कहेंगे? डिपेंड अपॉन इंडिया डेवलपमेंट सर, नॉट कम्युनल। बिल्कुल, इंडिया डेवलपमेंट कम्युनल नहीं होना चाहिए। सर, आप लोग भी वोटर हैं हैदराबाद के? नो। अच्छा, आप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से लोग लाइन में लगे हैं, एक बार हम कोशिश करते हैं पास में जा करके, क्योंकि लोग लाइन में खड़े हैं। सर, मैं आप लोगों से बस छोटी छोटी बातें पूछना चाहता हूँ कि क्या सोच करके वोट कर रहे हैं इस बार? थोड़ा आगे आ जाइए सर। हाँ, तो बात करो। थोड़ा आगे आइए सर। क्या सोच के वोट कर रहे हैं इस बार? क्या अच्छा लोग आना बोल के, देश डेवलप होना बोल के कर रहे हैं। Okay, all right, Mohammed. Okay, all right. We got देश का डेवलपमेंट। मैम, क्या सोच? Let's listen to that lady. सब खाने वाले छे। Okay, she is not impressed with all politicians. Asaduddin Owaisi, it's a bastion seat for him in Hyderabad. He's won by multiple lakh votes. It's a party that does contest in other parts, doesn't often win a lot of seats other than this bastion in Hyderabad. But of course, he'll be hoping that he returns to government over there. Okay, let's head across to Lakhimpur Kheri. मेरा अभिषेक सिंह स्टैंडिंग बाय। अभिषेक, चर्चा करिए वहां पर मतदाताओं के साथ, क्या मुद्दा है उनका आज? बिल्कुल हम लोगों से बात करते हैं। आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया? जी बिल्कुल किया। क्या दिमाग में था? क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कानून व्यवस्था है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट्स है। मनुष्य अपने आप स्वयं विकास कर लेता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, पानी की व्यवस्था रहे और कानून व्यवस्था अच्छी रहे तो मनुष्य अपने आप अपना विकास कर सकता है। बिल्कुल। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो पहली बार। आपने मताधिकार का प्रयोग किया? हाँ। क्या था दिमाग में? क्या जहन में क्या था? क्या मुद्दा था? मुद्दा क्या कहेंगे आप? क्या दिमाग में था जब वोट कर रहे थे? जो भी था ठीक था, क्योंकि हर चीज़ सुरक्षित होना चाहिए। भारत का अपना एक अच्छा सा जो विषय है, जो लेकर अच्छा आएगा वही अपना काम करेगा, जो वही उसी का। आपने पहली बार वोट किया क्या? जी हाँ। अच्छा, क्या था दिमाग में? इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या था जब वोट कर रहे थे? मेरे दिमाग में ये था कि 5 साल और मतलब क्या प्रोग्रेस होगी इंडिया की, तो उस बेस पे मैंने वोट दिया है आज। हाँ, बिल्कुल। पहली बार वोट दिया इन्होंने, प्रोग्रेस क्या होगी? सर, आपने वोट दिया? जी, वोट क्या दिमाग में था सर? क्या मुद्दा है? मुद्दा जो विकास करेगा उसी का मुद्दा है। हाँ। आपने पहली बार वोट दिया? क्या था आपके जहन में जब आप वोट कर रहे? जितना अच्छा विकास होगा उसी को वोट मिलेगा। हाँ। विकास पर लोगों ने वोट दिया। मैम, आपने भी किया वोट? जी। क्या सोच के किया वो? अच्छा विकास होगा और क्या। यहाँ देखिए लोग विकास की बातें कर रहे हैं। आपने वोट दिया? जी बिल्कुल। क्या सोच रहे थे जब वोट देते? देश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो और ओवरऑल विकास हो, यही सब मुद्दे थे और उन्हीं के आधार पे वोट दिया गया है। All right. Okay, Abhishek, we've got an understanding. Remember, it's a bastion seat, this one for the Bharatiya Janata Party. The incumbent has won it in 2014, won it in 2019 by increasing margins. Last time won by almost 3 lakh votes. This time, it's the Samajwadi Party who has fielded Utkarsh Verma against Ajay Mishra Teni of the Bharatiya Janata Party. It's been a seat that's been controversial in the past, primarily because of issues that have taken place. Thankfully, those issues seem to have stayed in the past, and it's calm, it's quiet, and a lot less poll rhetoric is going on. I'm going to quickly hop across back to Ashik, who's got more people with him. This is in Pulwama. Ashik, let's listen to more voices before we go to our guests.
बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पर लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों के कई सारे मसले मसाइल हैं। अगर हम बेसिक फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर आज तक जो है लोग बाइकॉट से ही रहते थे, बाइकॉट पर ही विश्वास करते थे, लेकिन लोगों में जागृति आई। 2019 के बाद यहाँ पर लोगों में तब्दीली देखने को मिली और आज यहाँ पर खुलेआम लोग जो है मतदान करने के लिए, वोट डालने के लिए निकले हैं घर से बाहर। आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर क्या क्या मसले मसाइल है। अगर हम इस इलाके की बात करें, पुलवामा का इलाका, और यहाँ पर किस तरह लोगों के मसले मसाइल है, बताइए। बहुत मसला है, रोड भी, बिजली भी, पानी भी, सब कुछ मसला होता है। यहाँ बच्चों को फ्यूचर जो खत्म होता है, बिल्कुल खत्म होता है। जो 0 डिग्री पर रोड मसला होता है वो कुछ नहीं होता है। तो अब क्या उम्मीद है जो आपका यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर जाएगा, बनाएगा, हम लोग जो बनाए चुनकर ये ऐसे हमारा काम करेगा। बिल्कुल यहाँ से काम करेगा। और भी लोगों से बात करने की, यहीं पे आप रहिए। आप मुझे बताइए, इस इलाके की जब बात आती है तो यहाँ पर लोगों में ज्यादातर बाइकॉट ही देखने को मिलता था। आज से पहले की बात अगर करें तो आज खुलेआम यहाँ पर लोग निकले हैं। मसले क्या है इस इलाके के, ओवरऑल अवर बताएं आप। लेना पुलवामा का गाँव, यहाँ बहुत सारे मसले हैं। पहले हमारे बच्चों का मसला है, जहाँ यहाँ खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। पिछली साल कुत्तों ने एक बच्चा खाया था। रीजन यही था कि उनके खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल। बाकी ये जो हमारे रोड है, 70 कोचे जो है वो तो बर्बाद खस्ता हाल है। बिल्कुल। अब हम पार्लियामेंट सुनना चाहते हैं जो हमारा काम करे। मुझे आप बताइए, आपने अभी कहा ऑफलाइन के मेरा पहली बार वोट है, आपकी उम्र कितनी है? और ये बताइए, आज पहली बार आप वोट डालने निकले हैं। 35 साल आपकी उम्र है और आज 35 साल की उम्र में आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, ऐसा क्यों? इससे पहले क्यों नहीं वोट डाल रहे थे? हुकूमत चेंज हो जाएगी, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। अच्छा, हुकूमत चेंज। आज कैसा लग रहा है? पुलवामा में हालात कैसे है? आज कैसे तब्दीली आप देख रहे हैं ग्राउंड पर? अच्छा लगता है, तो इसलिए आप आज निकले हैं। Okay. Ashik, thank you. Okay. बिल्कुल। What a sight it is, a 35-year-old coming out to vote for the first time. Okay. Hair of great, but is free to vote this time around. Who they vote for? It's a call. Okay. Make a judgment call. The person who's probably going to win is the NC candidate or PDP candidate. But if you just see more people coming out, that'll be a happy circumstance. Okay. My thanks to my colleagues who are there on the ground and in some of them in very hot places, slugging it out along with the voters. The shots on your screens, of course, of the PM short while ago from the Patna Sahib Gurdwara, where, of course, he was performing Seva. We'll come back and have these conversations. Joining us now on the broadcast as we open this up, Pankuri Pathak representing the Congress party, Dr. Kaushal Kant Mishra of the BJP, and Alok Mehta is joining us on the broadcast. Alok ji, let me pick up Kashmir first with you. We are hopefully, we are at 6% in the morning, so hopefully the turnout in Srinagar will double, maybe even triple by the end of polling. That itself would be such happy news. Congratulate the Jammu Kashmir people, because, you know, I have seen in 87, 82, those days, it was very difficult. Even the people were wanted to vote, but they could not vote. You know, because of such a politics was also there. And even when Jagmohan was there, it was very interesting. People voted for Jagmohan. Sometimes they just put written there. So now, after 370 abolished, I think this is the first time people are voting. And it's a very positive sign for democracy, for Jammu and Kashmir. And people are coming because they can vote anybody, National Conference or the PDP or BJP or Congress, anybody. But I think the people are coming out and they have confidence that, okay, we will have a democratic government. So I think this is the best sign for our democracy and showing. Even some terrorist threat and always there. But yeah, it was better. blanket boycott calls, and Umar Farooq was one of them leading it. Someone was telling me, I don't know if it's true or not, okay, but so I don't want to, unless it's confirmed and we see it happening, so I don't want to get into it. But somebody was telling me, my reporter on the ground, that you might just see Umar Farooq come out and vote. Okay, that will be a sight to see. Don't know if that's going to happen. It hasn't happened so far. So let me get Mr. Mishra into this conversation. Mishra ji, why not field a candidate? I know you're sort of backing the Apni party candidate, but why not field a candidate from Kashmir?
I think this is a decision taken by our organization, and whatever the decision taken, it cannot be discussed on television program. So I don't think there is any. There is some strategic planning and strategic thing. That is why probably we have not fielded it. But we are not fielded in many places. We started from two seats. Now we are all over the country. We are started in South India. So it's not only Kashmir. It's many places in the country, because first we work on the ground. We take the confidence of the people, and then only we go for vote. Okay, all right. So Pankuri Pathak, let me then put the question to you. Just the very fact that there is calmness, lot of people lining up to vote in places like in Pulwama, Budgaon, Srinagar, that the voter percentage is likely to double, triple, maybe even quadruple. Isn't that a bit of a success? Isn't that happy news? Well, obviously, voters coming out to vote is always a reason to rejoice. But because I was listening to the BJP spokesperson, I would also like to say that BJP, which has controlled Jammu and Kashmir directly or indirectly for a very long time now, if they are not able to, come forward and contest and participate in the elections, that just goes on to show how unpopular they really are. And they have totally run away from a fight in Kashmir. I think if they have really done something for the people of the valley, they should have come forward. Even if they knew that they are going to lose, they should have at least shown the guts to contest, to talk to people about what they have done or what they have not done. So I think the BJP should not have run away from the contest. It would have been more interesting if they would have fought. Okay, so Ms. Pathak, but nonetheless, it's good news that people are coming similarly, out. I know you have an alliance partner in the India Alliance and you take it seriously. Some states have seat sharing agreements, some don't. In Kashmir, you also chosen not to contest and you let Omar Abdullah contest. Why? No, at least we are clear on our stand. We at least know who's contesting. There's somebody from the alliance who's contesting. But with the BJP, because the BJP has claimed to really, transform the state, and they claim that their decisions have been very popular. So I think they should have allowed people to vote as to whether the decisions that they have taken for the state, whether they are popular or not, and we would have got a sense. But by running away from this contest, it means that the BJP is not willing to look at the reality, and they don't even want that the people should know that what the sentiment of the people is regarding the BJP. Okay, Mr. Mishra wants to reply to that. I'll give him a chance, and more developments are happening. I want to pick them up. I believe the PM is also in Patna. Mr. Mishra. In my opinion, what the BJP thinks, for us, the popularity is always the last thing. We work on the nation first concept, and that is why for us Jammu Kashmir integrity is more important. Jammu Kashmir integration to mainstream of the country is more important than our popularity. Yes, you will see in next future we are going to fight there, and we will form our government. So you can argue. We never go for we never go for popularity. We go for our country first. So you can absolutely argue it both ways. So you can argue that if the BJP was confident on getting Muslim votes, which is what the majority is in Kashmir, after 370, or a vote in confidence, that a high voter turnout is enabled by the abrogation of Article 370 and the peace that is coming. Or you can say, no, people are coming and voting for Omar precisely because they're upset about abrogation. You can debate it both ways. The abrogation is not being overturned. So that chapter is now closed. As you're watching the Prime Minister addressing a rally in Patna, where, of course, the battle is yet to commence. He was there, remember, doing a rally just yesterday along with Nitish Kumar as well as Ravi Shankar Prasad. Okay, I'm going to come to that in just a bit, because we discussed Patna. I'm going to come to that in just a bit. In a present context, okay, as we head from Kashmir, Alok Mehta, let's go down to Hyderabad. Okay, it's been a bastion for Asaduddin Owaisi. KCR has tried, Congress has tried, BJP has tried, but he seems to have a very good grip on Hyderabad. What does an Asaduddin Owaisi do very well in Hyderabad, which he's not been able to replicate in other parts of the country, despite having taken some electoral forays in other states? I think Owaisi took very strong only for minorities most of the time, because we need also leadership. Unfortunately, the Congress party and other parties also, we don't have any Muslim leader anywhere in this country. That is very shocking, and that's why Owaisi getting in his own area. Otherwise, he go to Bihar and other states also. But I think because in Hyderabad, he is ruling, and
BJP is trying there. Congress was also there. Telangana, Andhra Pradesh was the Narasimha Rao, Neelam Sanjeev Reddy, and all the presidents were there from. But even then, I feel that because of this population also in the minority, and he always talk about for the Muslims, the benefit, the welfare, and sometimes he speak very extremely. But you see in our interviews in media, I think he talk very well, at least in a very positive way also for his community. And that's why the Prime Minister Narendra Modi this time campaigning very aggressively in this area, because they want to show that in minority area also the BJP can win. Okay, but that boils down to the question, Mr. Mishra, that the BJP will end up contesting way over 400 seats. But in the 225, 240 million Muslims, why can't the party find a single candidate that you think can win who happens to be Muslim? Because winnability is the first criteria to give a ticket to anyone. And if we find that somebody is able to win, then obviously we will give the tickets. But otherwise, you see, whatever the PM Labharti Yojana is going on, I think beneficiaries, 70% of the Muslim population is beneficiary. Any of them is beneficiary of any of the policies of the. So in my opinion, gradually, when they feel more confidence and we feel that, yes, this candidate will win, winnability is the first criteria to provide ticket. That is why, and time will come when we will give tickets, no problem. Okay, so you're saying it will happen at some point of time. So let me ask Pankuri ji. Pankuri ji, I need to go. Mr. Mishra, okay, fine, carry on. My question is to Pankuri ji. Pankuri ji, it's a straightforward question. You've been talking about both in your manifesto, in your party leadership, who's been making rallies, giving interviews, that you intend to promote a Muslim quota in this country. In fact, remove the cap of 50% with parliamentary proceedings so that you can add the quota. So I'm assuming the Congress is hoping that the Muslim community is going to back you. But in places where the Muslim community has a large vote share, like Hyderabad, you're not been able to make a dent. Why is that? Well, that's not what the Congress party is saying. We want that there should be a caste census in this country where kind of a population and what is their current economic and social status. So that is what we are talking about. We are not talking about any particular religious group. We are saying that anybody who's backward, who has been kept out of the mainstream of development, they should be brought back into the development. I think the BJP has been rattled by this entire, this idea of getting a clear picture on the economic condition and social condition of the country, that they have been spreading this falsehood that this whatever we are doing is just for the Muslim community. This only shows the nervousness of the BJP, that they have tried to turn this entire, issue of better representation into a Hindu and Muslim issue. But I think that the BJP has totally failed in creating this propaganda narrative, and people in this. So let me get that correct. Election, it's a very different election from 2014. You are saying a Muslim quota is not part of the plan? No, it's not about quota. It's not. Nobody said that we are going to increase the bar on reservation because we want to give representation to Muslims. What we are saying in our manifesto is that we want to have a real picture through the caste census, and whichever community has been deprived of the of economic progress, of social and educational progress, they would be given a better accommodation in the reservations after this caste census takes place. So let me put that to Alok ji. Alok ji, before I bring in Mukesh Tyagi, Alok ji, so we've had a traditional sort of a polling logic that the Hindu vote is divided between regions and castes, but there is a Muslim vote in this country that can be made to vote on block. Okay, but is that still true? Because the Samajwadi Party is also looking for it, Mamata Banerjee is also looking for it, Owaisi, who's friends with neither of them, benefits from it in Hyderabad. Where does that leave the Congress party if all the others are also looking for the same vote? No, unfortunately, Congress party, they had the leaders like Abdul Ghani Khan Chaudhary, Fakhruddin Ali Ahmad from Assam. These kind of people, even this Antule was a good leader for even Maharashtra. Even Hindu used to vote for him. But what happened?
there's no leadership, because even then infighting in the Congress party, and they have not developed for any Muslim leader, and did not, what the schemes they had, the bilateral ministry. See, Salman Khurshid is a very good scholar, but he's a good liar also. But even then, in his ministry, 650 crores were not spent on his budget. You can imagine how much serious they were in those days when they were ruling. That's why the money is going to the regional parties, or OVC, and somebody else. But BJP is still, I see, in Lucknow, or you see in Ahmedabad, or in Bhopal, what information I have, people are even from Muslim community, and Three Talaq issue is not for Hindus. It's basically for Muslims. And that's why Muslim women, they are voting on Varanasi. Just now our reporter was telling from Varanasi, but number of women voters, they will vote for the BJP because of the Modi welfare schemes. You see, now they are trying to win over, but certainly they emphasize for the Hindu votes because some other parties, if they say Muslim reservation, just now Pathak was so let me put that question then to Pankuri ji. Pankuri ji, now in a real sense, Ghulam Nabi Azad, no longer part of the party. Salman Khurshid not getting a ticket. Ahmed Patel's daughter not getting a ticket. So despite the fact that there are Muslim candidates from the Congress, who in the senior leadership happens to be Muslim? See, obviously there are a lot of leaders from the Muslim community. They might or might not be contesting elections, but we have a lot of representation from all communities. I mean, I think that is the question that should be asked to the BJP, which has again, time and again, refused to give any representation to Muslims, be it in the ticket, be it any kind of nominated positions with the Congress. That is not the problem. And I think this election, it's very different in terms of the kind of communal polarization that we have seen in the previous elections. We are talking about our vision for the country. We are talking about our manifesto. We are talking about our 5 Nyay, about our 25 guarantees. And that is what is getting us support on the ground. People, hello? Yeah, go ahead. We can hear you. There was this message going on in social media that I saw yesterday that the BJP has tried its best, but the people, the Hindus and Muslims of this country, they have become so lazy that they are not willing to fight. So I think that is a very positive development, that in this election, people are really not seeing themselves as Hindus and Muslims. They are voting on their issues, which are unemployment, which is price rise, which is lack of economic development. And I think that is a new trend that we are seeing after 10 years. Okay, well, thank you for at least honestly answering the question. So let me put the same question which I put to the previous BJP spokesperson, and I'll put it to Mukesh Tyagi. Mukesh Tyagi, after having said that you worked so hard in providing the houses in which Muslims have also benefited, in providing the toilets in which Muslims have also benefited, in dealing with the issue of triple talaq, after doing all of that, how can we be sitting here and reasonably be saying that in a smorgasbord of India, the Bharatiya Janata Party can't find one Muslim candidate, and even the ones who were leaders who were there, former union ministers, are no longer in the front line of the BJP? Rishabh, I think the fundamental criteria is that we want to secure more than 400 seats in parliament. But it is not a discrimination against Muslim, as you rightly pointed out. Most of the central policies of the government are not discriminating in nature at all. Can you tell me which proportion is being divided into different communities? Absolutely not, zero. So this is a sabka saath, sabka vikas, sabka prayas, or sabka vishwas. This is absolutely non-discriminatory policies. The benefit is percolating down to every section of the society. And Mr. Modi started his as a prime minister right from 2014 that हम समावेशी समाज का निर्माण करना चाहते हैं. उसमें कोई भेदभाव या कोई कम्युनल दृष्टिकोण से हम विभाजित नहीं करना चाहते. This was his first pillar of politics. So nobody can castigate BJP that they are discriminatory or their communal nature. There are certain arguments, debates, which are very important for the overall development of the country. What community is contributing what to the nation? What kind of the conspiracies are being hatched in the name of the appeasement? And when we open this, but we have a Mukhtar Abbas Naqvi who is holding a great position, who was holding great position, and Shah Nawaz was made an industry minister in Bihar. So this is something which you cannot blame us. But Congress representation is dismal, let me tell you.
Most of the Muslim cadres today are basking outside the Congress arena. No, I asked the question because the truth is, if you look at the senior leadership, the core team, the thinking team of the Congress at the center, no, you can't, after Ahmed Patel can't readily come up with a Muslim name. And of course, his daughter is very upset that the Aam Aadmi Party is contesting that seat out of which her father had contested earlier, not her. But my question to you, Mukesh Tyagi, is that polarization does generally benefit both sides. So when you come and say that ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले ना, who are we alluding to here? No, let me tell you one thing. Mumtaz, for example, you gave a good example. Ahmed Patel's daughter, who was promised relentlessly, she worked in her constituency for last 2 years. Last moment, she was denied the ticket. She was, I'm sure, she's very demoralized, and most of the people, he was the tallest leader, and he had a huge following in Gujarat. She was denied the ticket. So I don't know what is the reason for that. Yeah, that's but maybe they accommodated up. But I want to answer your question that we are absolutely pro-development, Rishab. We want India to come into the developed category. We don't want to compromise at all under any circumstances. Our first and foremost objective is that we should be growing as economy number one. We have created a huge space, conspicuous space on the international pedestal. And Mr. Modi's determination is that we must become the most powerful for sure, that is where we started this election. But let's not kid ourselves to say that the old issues haven't come back to some extent. Now, who's benefiting from them, we'll find out. Alok Mehta ji, now, in the assessment of we would all want to do an election in which caste is not an issue, religion is not an issue, identity is not the issue, and it's primarily about development, who's delivered more. But emotional issues of who you are and what you want to be do make a difference. Are we seeing a pivot point in this election that something different is taking place? Indian voters, basically, they are very emotional also. In other countries also, on the United States, people vote for money, power, or like Trump. But even then, India, because they want a strong India, they want for religious places, even for mosque or for temple or church, they are religious. But even then, now, after 75 years, people are more aware. People want to vote for development, basically for caste. That's why the parties always give care for those people who can represent the caste. But the more emphasis will be on development. But one point about Ahmed Patel and all, even for the Mukhtar Abbas Naqvi, I want to tell you, the problem is even the progressive parties, like frankly speaking, Nitish Kumar was not very comfortable for Shahnawaz Hussain. Mukhtar Abbas Naqvi sabotaged by his own party. Sorry to say, because I know inside how it happened. Nobody wants the minority leader should come, even their own party or outside party. For Ahmed Patel, Ambika Soni was deadly against him. In last few years before he died. I don't know. This kind of infighting created problem for the parties the minority. All right. I want to touch one more point before we wind up this conversation. Let me start with Pankuri ji. Pankuri ji, we've just seen your former party president, now Rajya Sabha MP Sonia Gandhi, come out and once again speak about 1 lakh rupees for women. Ma'am, have you done the mathematics about this? Because 1 lakh rupees for how many women is the question? Well, anything that we are saying is being said after a lot of deliberations and calculations. We have been in the government for a long time, and we have run a lot of welfare schemes in the past which have benefited people in large numbers. So obviously, whatever we are saying on basis of a lot of research. Why is it important to talk about women and talk about their economic empowerment? Is that in these last 10 years, when we saw an increase in unemployment, a lot of women were pushed out of the workforce due to demonetization, due to economic uncertainties, due to small businesses being shut down. I think a lot of people who have really been left out are women.
So we need to ensure their economic, their social empowerment, and that is why we are again and again talking about women empowerment. And we have, there are certain things that we have done in states that are governed by us. For example, in Karnataka, we have come up with a lot of schemes for women, the free, bus service and everything, the Mahalakshmi Yojana, and they have been working on the ground. So women, I don't think, are feeling more confident and more I don't think empowered. anybody will dispute that, yes, women are not only desirous of empowerment, but also politically are important, increasingly important, and maybe Narendra Modi figured that out also a long time ago because he's also been viewing them in a similar way. So Mukesh Tyagi, let me ask you then this question. Yeah. When the Congress says we are going to guarantee or some sort of offer 30 lakh government jobs, we're going to do a caste census, and we're going to give 1 lakh to the eldest woman in any poor household, isn't that a tempting offer? First of all, it is a hollow promise. Let me tell you, it is not it can't be executed because the budgetary allocation does not permit. This is a huge allocation of money which they have not quantified. What will be the impact on the budget? We are talking about fiscal deficit, disciplined fiscal deficit. Are we going to either let the fiscal deficit go and dole out all the things without any budgetary calculation? Number one, it's a hollow promise. I don't think they will ever implement. Most of the time, they have failed in implementing. When the farm loan wave came, Rahul Gandhi said 1, 2, 3, in 10 days we'll waive the loan. What happened? Now in the old pension scheme in Himachal Pradesh, which they won the election on a very thin margin against BJP, what is happening there? They are under the debt, and as a result of that, they have not been able to pay. There are huge areas, Rishabh, of the teachers and all the people who were depending on this old pension scheme because they don't coffers are empty. So these people have made, you can analyze Himachal Pradesh fiscal situation right now is so critical in nature, they have stopped paying. So making a promise and implementing Mr. Modi, what he says, he guarantees and performs. Okay, you've heard both sides. Ladies and gentlemen, if only 1% of India's women are given 1 lakh rupees each from government, that is 2 lakh crores. That's roughly about 40 to 50% of your defense budget, okay? So does the maths need to be done? Probably. Is it a tempting offer for many? The BJP, remember, has its own Lakpati Didis, which has been going on for some period of time. And they'll say, we've given you the toilets. We've given you the dignity of not having to hunt after water. We have worked on this for long more. So yes, this is a frontline conversation that's going to continue. But clearly, the Congress is doubling down on this because in a very rare statement from Sonia Gandhi in this election, remember, she's not contesting and not really campaigning effectively, and that's for reasons of health and nothing else. In a very rare statement, they've asked her to come out and make this statement, so that tells a lot. Okay, I'm going to thank Alok Mehta, thank Pankuri, and thank Mukesh ji. Thank you very much for joining us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.